Welcome back to my channel, Tutor Theory. पहले हमने कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर चुका था, जिसमें कि हमने टाइप्स, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया था। और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज वॉच योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे barrier of effective communication and nurse patient relationship. So let's start the topic. Today's first topic is barrier of effective communication. Under this, there are several barriers. We will discuss one by one. They are language barriers, physical barriers, lack of attraction, cultural differences, emotional barriers, lack of trust, hierarchy, emotion overload, information overloaded. Here are some more barriers that are poor communication channels, noise and distraction, and conflicts. So the first point is physical barrier. Here the physical disabilities like hearing problem or speech difficulties can make it difficult to communicate, right? It means whenever two person are speaking, right? And if the one is having any kind of hearing problem or he is using hearing aids where he is using, or the other person or the speaker only problem है speech में, he's having the speech difficulties, he's not able to speak properly, right? So our communication will be not so much effective, right? Because if the person is using hearing aids, we have to speak loudly. If he's not having the hearing aids in his ear, और अगर स्पीच डिफिकल्टीज है किसी को, तो उनकी लैंग्वेजेस समझ में नहीं आएंगे. जो लिसनर है, he will not able to understand what the sender want to say. That it will come under physical barrier. Second one is lack of attention. If the receiver isn't paying attention, right? Receiver is not paying the attention, they may not understand the messages. Means whatever the message a sender is sending to the receiver, if the receiver is not having the interest in the topic, he or she won't understand what the sender want to send the messages, right? Third one is language barrier. Using unfamiliar words, which is not the listener who has not been used to that word or he has not listened before the words, तो वो language barriers में आ जाएंगे. For example, if a doctor is saying a medical term to the patient, right? He or she won't understand the medical term. If we will say you are having gallbladder stone to a illiterate person, है ना? So he will not understand unless and the doctor will use the appropriate language, means what the language they are using to communicate. If the doctor is not using that term, the patient won't understand what the doctor want to say to him, right? The second one is speaking too fast. If the sender who is speaking is saying very fastly, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, then also what it will happen, it will not affect our communication, right? So this 3 point we have discussed, in which it was physical barriers, lack of attention, and language barriers. Coming to the next slide. The fourth one is cultural difference in religion, right? In India, there are different types of religion, different types of tradition we are following, right? So it will also affect in our communication. How it will affect our communication means, in Hindu we can see, क्या देखते हैं उसमें कि they use puja dhaga to tie in hand, they use tilaks and all, right? In Christian we see that they just use Bible in the Bibles. So according to culture, right?
the communication is being affected. Coming to emotional barriers. In emotional like stress, anger, and low self-esteem can make it difficult to communicate. If the person जो कि बहुत ही स्ट्रेस पे है, एंगर में है ना, if we are going and consoling her, right? If he or she is angry in somebody and we are going and consoling her, then what the opposite person will think? He will not, वो मानेगा ही नहीं कि ये गलत है, right? Means जो वो सोच रहा है that is only correct, he will think. तो उसमें क्या दिक्कतें होंगी? Whatever we are trying to explain him or her, they will not understand. That is called emotional barrier. If any person is in stress, we are going and talking to him, our communication will not be effective. If a person is in angry and we are going and talking some important topic to discussing some important topic, then also it won't be easy for the communication will be not effective. The sixth point is lack of trust. If someone doesn't trust to the sender, they may not spectacle of the messages. Means whatever the message the sender is sending to the receiver, if beforehand he or she has उनके ट्रस्ट को वो तोड़ चुका है, देन क्या होगा? जो सेंडर है फिर से अगर कुछ चीज वो एक्सप्लेन करने जा रहा है, कुछ चीज उनको बताने जा रहा है या करने के लिए बोल रहा है रिसीवर को, देन ही विल नॉट take it. Like, right? For example, if a nurse, while taking care of a child, she says that आप ये मेडिसिन ले लो, मैं आपको चॉकलेट दूंगी, right? But after taking the medicine, nurse do not provide chocolate to the children. Next time when that nurse will go and she will say, ये medicine ले लो, I will give you chocolate. Then also, then what the child will do? He will refuse to take the medication. Why? Because there is lack of trust, right? So lack of trust also plays a major role in making the communication most effective, right? Next one is hierarchy. Hierarchy and power dynamic can make it difficult to communicate, right? Here it is two words, hierarchy and power dynamics, right? So first of all, what is hierarchy? Hierarchy means from top to bottom, right? From top to bottom or from bottom to top in a hierarchical manner. For example, हम लेते हैं in hospital, housekeeping department is there, right? तो वो जो भी employee housekeeping में है, they will listen to whom? To their housekeeping department, right? Their head. But if the doctor will come and try to show the power to them, right? Then what they will think? हम तो इनके नीचे काम करते नहीं है. Why he is scolding to us? Why she is scolding to us? Whether the doctor is telling the proper thing only, है ना? Useful things बता रहे हैं कि blood को किस तरह से साफ करना है, stain को किस तरह से साफ करना है, but they will not listen to the doctor, right? To whom they will listen? To their manager, right? So that is hierarchy. We have to go to in a hierarchical process from the top to bottom. अगर वहां पे कोई और आ जाएगा उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए, उन्हें पावर दिखाने के लिए, then they will not accept it, right? Coming to information overloaded, right? So too much information can make it difficult to communicate, है ना? For example, we will take when we were in school, है ना? स्कूल टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक ही दिन में पढ़ाई हो जाते थे. We were not able to memorize it, है ना? और घर में जाके फिर पूछा जाए कि आज क्या पढ़ाई हुआ था, क्वेश्चन किया जाए क्या पढ़ाई हुआ था, we will not able to answer it, right? But अभी अगर पूछा जाए
अभी हम क्या है, एक ही फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स नर्सिंग के सब्जेक्ट है, बायोलॉजी या हो गया, ठीक है, नर्सिंग के सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो व्हेन नाउ आप घर जाओगे, अगर घर से कोई पूछा कि क्या पढ़ाई हुआ आज, देन यू विल टेल कि हाँ आज ये टॉपिक हुआ। मीन्स यू कैन, मीन्स अभी क्या है, एक ही फील्ड चल रहा है, हमारा एक ही टॉपिक चल रहा है, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, हाँ हम ये पढ़ाई करें, है ना। मीन्स द सेंडर जो है क्या है, द सेंडर को टू मेनी इंफॉर्मेशन एक ही साथ रिसीवर को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ताकि जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अगर टू मेनी इंफॉर्मेशन, टू मेनी पॉइंट्स एक ही दिन में डिस्कस हो जाएंगे, देन रिसीवर को क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा communicate करने में, right? He will not able to grasp everything and he will not able to do what the communication has been given, what the topic he or she has been provided to do. The next one is poor communication channel. Na? Poor communication channel can make it difficult to communicate. For example, a person is taking is in conference room. In conference room, there is no PowerPoint presentation. There is no mic. Would be the communication effective? No, right? है ना, कम्युनिकेशन वहां पे इफेक्टिव एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज लार्ज ऑडियंस है, और वहां पे क्या है, ना तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ना तो माइक है, तो हिज वॉइस विल ऑल्सो बी नॉट ऑडिबल टू एवरीवन, है ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स है, इट ऑल्सो अफेक्ट अ मेजर रोल इन कम्युनिकेशन। So the next point, noise and distraction. Right? Noise and distraction can make it difficult to communicate. For example, we will take a person is in market and he wants to talk to his friend, है ना। मार्केट में क्या होता है, नॉइस ज्यादा होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस भी ज्यादा होते हैं, है ना। नॉइस प्लस डिस्ट्रैक्शन वहां पे हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो पर्सन का वॉइस है इज नॉट ऑडिबल, जो सेंडर है हमारा एंड जो रिसीवर है, राइट। तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो हो रहा है इज इंटरप्टेड बाय हु, बाय द नॉइस एंड बिकॉज ऑफ सेवरल डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। वर्क प्लेस हो ये तो कहीं पे भी देख ले, क्या होगा अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या, लड़ाई झगड़े, प्रीवियस के लड़ाई झगड़े अगर वो लेकर के बैठे हुए हैं, तो दोनों के बीच में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, देन द टारगेट दे हैव टू फुलफिल, इट वोंट बी फुलफिल्ड एट द राइट टाइम, है ना। So this all were the point which affects the effective communication. The next one is nurse-patient relationship. So a nurse-patient relationship is a complex interaction. The aim to provide the patient well-being. Here what it is saying, ये interaction है between whom? The nurse and the patient. Interaction between whom? The nurse and the patient, in which they both aimed to improve. उनका गोल होता है to improve the patient well-being, है ना। पेशेंट जिस प्रॉब्लम से आया है उसको वो लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, कौन, नर्स एंड पेशेंट। हाउ दे विल सॉल्व, बाय बिल्डिंग अ प्रॉपर रिलेशनशिप, राइट। Next, it is based on the trust, which is the foundation for compassion, effective communication, shared discussion. Making a strong nurse-patient relationship can help to better patient outcome and satisfaction, and can also be benefit the nurse, right? तो जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो किस में डिपेंड करता है, हाउ इट इज बीइंग बिल्ड, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द ट्रस्ट, है ना। मेन इसमें क्या है, ट्रस्ट के बाद ही आगे का कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट। तो वन बाय वन वी विल सी हाउ इट इज बीइंग वर्क।
here are some component of nurse patient relationship. The first one is trust, right? The first one is trust. If the nurse, right, and the patient, they are communicating, if they are communicating and they are not having the trust between them, right? For example, previously जो मैंने बताया था, जो नर्स है चाइल्ड को मेडिसिन लेने के लिए कहती है, इफ इज नॉट टेकिंग, देन नर्स कहती है कि आई विल गिव यू चॉकलेट, एंड सी इज नॉट गिविंग द चॉकलेट। आफ्टर बच्चे ने मेडिसिन खा लिया तो वो चॉकलेट नहीं देती है। नेक्स्ट टाइम फिर से वो वही रीजन कहती है, आई विल गिव यू चॉकलेट। द पेशेंट, द चाइल्ड विल नॉट ट्रस्ट हर, राइट? तो मेन जो है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज ट्रस्ट। टू बिल्ड द ट्रस्ट, to have a proper nurse patient relationship. Second one is respect. There should be respect for the patient and the patient should also have the respect for the nurse, है ना? इसमें दो चीज है, what it is, nurse should have the respect to the patient, to her patient, and the patient should also have respect towards the nurse, right? For example, पेशेंट अगर ये सोचेगा कि इसका तो काम ही है मेरा केयर प्रोवाइड करना, सो व्हाई शुड आई गिव रिस्पेक्ट टू हर, आई एम पेइंग द फीस टू हर, सो व्हाई शुड रिस्पेक्ट टू हर, राइट? तो ऐसे में क्या होगा, जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, है ना? और उससे क्या होगा, जो पेशेंट का इलाज होना है, जो मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, जो भी उसको ट्रीटमेंट देना है, इट वोंट बी इफेक्टिव, बिकॉज गोल को अचीव करना इसमें है, हमें गोल और क्या है, पेशेंट को ठीक करना है। पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज द रिलेशनशिप इज नॉट being created or it is not effective between them. The next one is professional intimacy and the last one is empathy. In empathy what it is means, पहले भी हमने देखा क्या, पेशेंट जो है और जो नर्स है, नर्स को पेशेंट को कैसा लग रहा है उसके उस पे रख करके खुद को सोचना है, एंड सिविल खुद वो मेमोराइज करेगी, फील करेगी, देन what she will do, implement her work, start to implement her work, right? तो ये सारे चीज क्या है, इस पे डिपेंड कर रहे हैं, in what nurse patient relationship. This four are the major component of nurse patient relationship, that are trust, respect, professional intimacy and empathy. The next one is factors influencing nurse patient relationship. So what are the factors influencing nurse patient relationship? Are education, their education, professional experiences and life experiences, है ना? तो what are the factors influencing nurse patient relationship? First point is their education. Education for whom? Only for nurse or only for the patient? It is both for the nurse and the patient. अगर एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हो, है ना, तो क्या होगा, द रिलेशनशिप जो उनके बीच में बिल्ड होना है, एक नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं हो पाएगा। कमिंग टू प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, है ना, नर्स जो है अगर जितना उसका एक्सपीरियंस होगा, शी विल बी मोर effective in creating the nurse patient relationship. लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइट? लाइफ में लोगों के साथ बहुत कुछ होता है ना, तो लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, राइट? जैसे पेशेंट कोई हॉस्पिटल में था प्रीवियसली, राइट, एंड द नर्स हु वाज ट्रीटिंग टू हर, शी वाज नॉट प्रॉपरली ट्रीटिंग, उससे हार्शली बात करती थी, है ना, she was not respecting to that patient. So what the patient will think, that all nurses are same, है ना? तो next hospital या तो next जब भी वो hospital जाएगा, he will not trust to the nurse or she will not have respect towards the nurse, है ना?
तो लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बिल्ड होता है। सेम अपोजिट भी होता है, नर्स को ऐसा पेशेंट मिला जो कि कभी उसे ट्रस्ट ही नहीं कर, कभी उसका रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, देन व्हाट शी विल थिंक दैट एवरी पेशेंट आर सेम एंड शी विल बिकम हार्श टुवर्ड द एवरी patient, right? So what were the factors influencing nurse patient relationship? Was three: their education, professional experiences and life experiences. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप टाइप। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। द फर्स्ट वन इज क्लिनिकल नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये क्या होता है, क्लिनिकल सेटिंग्स पे, राइट, इन क्लिनिकल एरिया nurse patient relationship means to achieve the goal, क्या हो रहा है यहाँ पे, नर्स और पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, दैट इज योर क्लिनिकल नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। द सेकेंड वन इज थेरेपेटिक रिलेशनशिप। इन थेरेपेटिक रिलेशनशिप बोथ द नर्स एंड पेशेंट ट्राइज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, है ना। यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट्स के, वो क्या करते हैं, नर्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, नर्स को बताता है, एंड देन नर्स क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है, उनको फील करके फिर क्या करती है, वो इम्प्लीमेंट मीन्स प्लानिंग करती है, प्लानिंग के बाद फिर दोनों मिल करके क्या करते हैं, दे विल ट्राई टू अचीव देयर गोल। द connected relationship, nurse patient relationship. Next one is your over involved relationship। in over involved relationship क्या हो रहा है, जो नर्स और पेशेंट के बीच में प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो होना चाहिए उससे बढ़ के हो जाता है। मीन्स इसमें फॉर एग्जांपल क्या होता है, नर्स और पेशेंट के बीच में जो पेशेंट के हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्कशन होना चाहिए उससे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। मीन्स पर्सनल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, है ना, मीन्स एक तरीके के अफेयर्स क्रिएट हो जा रहे हैं, राइट। दैट इज योर ओवर इन्वॉल्व रिलेशनशिप, जो कि क्लिनिकल सेटिंग्स के बाहर भी, मीन्स हॉस्पिटल्स के बाहर भी फिर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। नेक्स्ट योर लास्ट वन इज यूनिलैटरल नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इन विच क्या होता है, पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट ट्राइज कि मैं कुछ भी ना करूं और मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, नर्स पूरा काम करे, राइट। नर्स पे वो सारा भार छोड़ देते हैं कि सी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग टू मेक मी फिट एंड फाइन, है ना। दैट इज योर यूनिलैटरल रिलेशनशिप। पेशेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है अपने हेल्थ को लेकर के, पूरा काम क्या करती है, नर्स करती है। दैट इज योर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो टोटल इतने रिलेशनशिप हैं आपके, दैट इज फर्स्ट वन इज क्लिनिकल रिलेशनशिप, सेकंड इज थेरेपेटिक रिलेशनशिप, next is connected relationship, over involved relationship, and the last one is your unilateral relationship। Next topic है your phases, four phases of nurse patient relationship, right? There are four phases of relationship। The first one is pre-orientation phase, right? It is pre-orientation phase, and this phase क्या होता है, means for example हम लेते हैं, nurse भी है हॉस्पिटल में, पेशेंट भी है हॉस्पिटल में, राइट। तो जब शिफ्ट जो ओटी से नर्स शिफ्ट कर रही है पेशेंट को कहाँ, वार्ड में, है ना। तो बिफोर पेशेंट से मिलने से पहले नर्स क्या कर रही है, उसके फाइल को स्टडी करती है ना, पेशेंट के पूरे फाइल को स्टडी करेगी, तो पेशेंट के पूरे फाइल को स्टडी कर रही है नर्स, है ना। दैट इज प्री ओरिएंटेशन फेज। सेकेंड वन इज योर ओरिएंटेशन फेज। इन दिस फेज क्या होता है, नर्स एंड पेशेंट, राइट, नर्स एंड पेशेंट बोथ आर इंटरैक्टिंग फेस टू फेस, वो लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम पेशेंट्स के हैं वो नर्स को बता रहा है, और नर्स जितने भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, है ना, वो उससे निकालने की कोशिश कर रही है, उसे जानने की कोशिश कर रही है। दैट इज योर ओरिएंटेशन फेज। द सेकेंड फेज इज योर वर्किंग फेज। इन वर्किंग फेज बोथ द नर्स एंड द पेशेंट
नर्स जो है क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि हाउ पेशेंट विल रिगेन हिज हेल्थ। और फिर दोनों मिल करके, नर्स एंड पेशेंट दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, गोल को अचीव करने के लिए पूरे कोशिश में लग जाते हैं, राइट। तो दैट इज योर वर्किंग फेज। द लास्ट वन इज योर टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में एंड फेज है ना। इन दिस फेज क्या हो रहा है, द रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड, है ना। मीन्स क्या है, अब पेशेंट का डिस्चार्ज होने वाला है, तो जो नर्स है वो पूरा इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकेशन, अबाउट द डाइट, सब चीज वो किसको बता रही है, पेशेंट को बता रही है ना। तो दैट इज योर टर्मिनेशन फेज, एंड फेज। तो देर आर 4 टाइप ऑफ phases in nurse patient relationship. That is your pre-orientation phase, second one is your orientation phase, working phase, and the last is your termination phase. Right, so here it is written the same, that is your pre-orientation phase में क्या हो रहा है, the nurse prepares for the patient by reviewing their medical record and other data. जो भी डाटा है, मैंने पहले जैसे बताया, पेशेंट को रिसीव करने से पहले वो क्या करती है, पेशेंट की रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स, उनकी रिपोर्ट्स, सब चीज कलेक्ट करके उसको रिव्यू करती है कि व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम द पेशेंट इज हैविंग, गोइंग थ्रू, राइट। ये तो क्या ट्रीटमेंट उसको हो चुका है, क्या मेडिकेशन उसको चल रहा है ना, किससे उसको एलर्जी है, सी रीड्स एवरी पॉइंट। Next one is orientation phase. The nurse introduce themselves and begin to learn about the patient's needs, values, beliefs and priorities, है ना। खुद को क्या करिए, first of all nurse introduce to the patient to herself, और उसके जितने भी needs हैं, patient की needs है ना, हॉस्पिटल में रह करके उसके जितने भी नीड्स है, अगर फ्रैक्चर है पेशेंट को तो फ्रैक्चर के टाइम पर उसे जितने भी हेल्प चाहिए, उनके जितने भी बिलीव्स हैं, कल्चरल बिलीव्स हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो भी प्रायोरिटीज है पेशेंट के हेल्थ के रिगार्डिंग लेकर के, है ना, सबको जानने का कोशिश करती है, ठीक है, इन ओरिएंटेशन फेज। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज योर वर्किंग फेज। इसमें जैसे मैंने बताया, पेशेंट एंड नर्स वर्क टुगेदर टू मीट देयर स्टैब्लिश्ड गोल, है ना। दोनों का गोल क्या है, पेशेंट तो वहां रहने आया नहीं, मेहमान है नहीं, सो पेशेंट क्या करना है उनको, वहां से डिस्चार्ज लेना है। डिस्चार्ज लेने के लिए क्या करना है उनको, जो नर्स उनको एडवाइस करेगी, है ना, वो दोनों मिल करके फुलफिल करने का कोशिश करेंगे। दैट इज योर वर्किंग फेज। लास्ट इज टर्मिनेशन फेज, द फाइनल स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप वेयर द पेशेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रोग्रेस एंड क्रिएट क्लोजर, है ना। टर्मिनेशन कब होगा, जब पेशेंट का जो हेल्थ है वो ठीक होने लगेगा, वो अपना हेल्थ रीगेन करने लगेगा, दैट देन द लास्ट स्टेज विल कम, दैट इज योर टर्मिनेशन फेज, है ना। इस ये रिलेशनशिप को क्लोज करने के टाइम पे जितने भी डिस्चार्ज प्रोसेस होते हैं, जितने भी एक्सप्लेनेशन होते हैं, है ना, अबाउट द मेडिकेशन, अबाउट द डाइट प्लान, एवरीथिंग हु इज एक्सप्लेनिंग, द नर्स, राइट। ना, यहाँ पे प्री ओरिएंटेशन फेज है जिसमें कि पेशेंट, जो नर्स है वो पेशेंट के पूरे फाइल्स को गो थ्रू कर रही है। सेकंड वन इज योर, यहाँ पे ओरिएंटेशन फेज जिसमें कि पेशेंट और नर्स एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो नर्स पेशेंट से जानने की कोशिश कर रही है। द नेक्स्ट वन इज योर वर्किंग फेज। इन वर्किंग फेज दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं टू अचीव देयर गोल्स, है ना। द लास्ट वन इज योर टर्मिनेशन फेज। इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट अपना हेल्थ गेन कर चुका, अब वो डिस्चार्ज फेज में आ चुका है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट बिलो, और वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon so that you can get your new topics related to nursing subject. Thank you.